Hello everyone, a very good morning to all of you and welcoming you all to another session of POLITY by M.Laxmikant. So, आज आमे पढ़िबा पार्ट 4 जो थरे कि आमे पढ़िबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किंतु ता पूर्वरु आमे प्रीवियस क्लास रे जो सब पढ़िथिले प्रीवियस क्लास रे सब क्वेश्चंस गुडा को गोटे क्विक रिकैप कर दबा जहा फल रे कि हमर टिके रिवीजन हे जिवो इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर क्वेश्चंस ठीक अछि तो आसंतु गोटे क्विक रिकैप करनबा क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच एक्ट आल्सो नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्ट को हमर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाउतला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्वेश्चन नंबर 2 हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आस्क्ड मेनी टाइम्स इन various exams which act also known as Morley Minto reform Indian Council Act 1909 Question number 4. Who was the first Indian to join as the law member in Viceroy's Executive Council? Answer. Satyendra Prasad Sinha. He was the first Indian to join as a law member. Then question number 5. Who is known as father of communal electorate? Lord Minto. Lord Minto को father of communal electorate कहा जाए कौन पे कहा जाउथला काहे कि ना लॉर्ड मिंटो थिले जे कि प्रथम थरा पई कहिथिले कि जते बेला हमर वोटिंग सिस्टम होबो इलेक्शन होबो माने मुस्लिम मानो को से माने मुसलमान माने वोट देबे एवं हिंदू मानो को हिंदू माने वोट देबे सेति में फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाए लॉर्ड मिंटो को ठीक अछि तो आसंतु आजिरो सेशन स्टार्ट करिबा आजिरो सेशन रे हमें अछि पढिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कौन हेतिला एही एक्ट को आउ कोन कहा जाय ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोली मध्ये कहा जाय मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाय काहे की कहा जाय काहे कि ना एई जो एक्टा कहा बंधरे हेतिला एडविन मॉन्टेगु जे कि हमर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थिले सेई समय रे आउ हमर आउ के रहले मॉन्टेगु आउ चेम्सफोर्ड आउ लॉर्ड चेम्सफोर्ड थिले से समय रो वाइसरॉय ऑफ इंडिया एई दि जणक भितरे ए चुक्ति हेतिबारु एई थिले 1919 मसिया रे ताको हमें कहा जाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एई एक्ट को आउ मध्ये कोन कहा जाय रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट काहे कहा गला काहे कि ने एई एक्ट हिसाब रे कोन करा गला बहुत किछि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करा गला बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया को शासन करिया पे बहुत किछि जिंस रिफॉर्म करा जायथिला कोन यार फीचर्स थिला आसंतु देखिबा फर्स्ट फीचर्स थिला इट प्रोवाइडेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू टू कैटेगरीज नेमली सेंट्रल सब्जेक्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट एई 1919 फीचर्स हिसाब रे कोन करा गला ना हमर जो सब्जेक्ट्स थिला जेति जेमते एइना भी हमर सब्जेक्ट अछि ना यूनियन लिस्ट रे अछि किछि से कहा सब लिस्ट अंडर रे अछि कनकरेंट लिस्ट अंडर रे किछि सब्जेक्ट्स अछि त कोन करा गला ना एही एक्ट हिसाब रे क्लासिफिकेशन कर दिया गला टू टाइप्स रे कौन से क्लासिफिकेशन डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स फर्स्ट वन इज सेंट्रल सब्जेक्ट्स आ गोटे हला प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स ठीक अछि आ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अगेन टू पार्ट रे डिवाइड करा गला सेटा कोन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रिजर्व्ड सब्जेक्ट एबे देखिबे रिजर्व सब्जेक्ट रे किछि रहि छंती ट्रांसफर सब्जेक्ट रे किछि पार्ट्स अछि कोन रहिबो the transfer subject include कौन include रहिला first is public health education local self government agriculture एई सब रहिला हमर को सब्जेक्ट रे the transfer subject रे आ reserve subject रे कौन रहिला the reserve subject included police administration of justice prisons land revenue finance etc तो एई सब रहिला रिजर्व रे तो एग्जाम रे क्वेश्चन आसी परिबो रिजर्व लिस्ट रे को कौन सब्जेक्ट्स इंक्लूड थिला और ट्रांसफर रे कौन इंक्लूड थिला The transfer subjects were to be administered by governor with the aid of the ministers. ए जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो सब रहिला ट्रांसफर सब्जेक्ट्स ता कहा रिस्पांसिबिलिटी रे रहिला गवर्नर with the aid of ministers. Our reserve subject जो सब रहिला the reserve subject on the other hand were to be administered by the governor and his executive काउंसिल ठीक अछि रिजर्व सब्जेक्ट सब जो ए रिजर्व सब्जेक्ट अंडर जे सब रहिले से माने को के हैंडल करबे गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल एठी मिनिस्टर्स ऐड करूछन्ते हेल्प करूछन्ते एठी ओनली काउंसिल दिस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरेक्टिव वेरी इंपोर्टेंट अगेन ए जो डुअल सिस्टम कर दिया गला सब्जेक्ट्स को टू टाइप से डिवाइड कर दिया गला आपको हमें कहबे डायरेक्टिव ए जो सिस्टम टा को कहा गला डायरेक्टिव देन डायरेक्टिव वर्ड टा गोटे ग्रीक वर्ड व्हिच मींस डबल रूल हला एति गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कले रिजर्व सब्जेक्ट को
आ एठी के कले गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एठी लेजिस्लेटिव काउंसिल एठी एग्जीक्यूटिव काउंसिल करा गला हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल किंतु ए प्लान टा सक्सेस हेई नथिला अनसक्सेसफुल हेई जाइथिला फीचर्स नंबर 3 कोन कहूची ना फर्स्ट टाइम पई एठी बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस करा गला कहा को इंक्लूड करा गला बाइकैमरलिज्म हिसाब रे कोन हला बाई माने टू गोटे रहला अपर हाउस गोटे रहला लोअर हाउस बाइकैमरलिज्म इलेक्शन रा include करा गला thus the Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature consisting of an upper house and a lower house गोटे upper house रहिला गोटे lower house रहिला the majority of members of both the houses were chosen by direct election किंतु ए दी जण जाक मेंबर को केमती चूज करा जाउथला by direct election then feature number 4 it required that the 3 of the 6 members of viceroy's executive council other than commander in chief were to be Indian एटा important आसिला again कि ए जो हमर काउंसिल रहला एठी कोन करा गला ना कमांडर इन चीफ को व्यतीत बाकी समस्त इंडियन रहिबे then features number 5 it extended the principle of communal representative by providing separate electorates for Sikh Indian Christian Anglo Indians and European आगु कोन थिला ओनली मुस्लिम और हिंदू मानन को पे सेपरेट इलेक्टोरेट थिला एठी कोन करा गला आहुरी एक्सटेंड कर दिया गला अदर्स रिलीजियंस मानन को जेमिति कि सिख क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस features number 6 it granted franchisee to a limited number of people on the basis of property tax और अदर क्वालिफिकेशन प्रॉपर्टी टैक्स एवं अन्य किछि क्वालिफिकेशन योग्यता हिसाब रे फ्रैंचाइजी रो लिमिटेशन को दिया गला देन फीचर नंबर 7 इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन रे इंडिया हाई कमिश्नर पाई गोटे ऑफिस खोला गला एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शन ऑफ तांको किछि फंक्शंस ट्रांसफर करि गला then feature number 8 it provided for the establishment of public service commission again एक public service commission कहा को एक्ट हिसाब रे हेतिला तो ए 1919 एक्ट हिसाब रे करा जाइतिला hence a central public service commission was set up in 1926 for recruiting civil servants मानको recruitment पई केबे पब्लिक सर्विस कमिशन सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन तयारी हेतिला 1926 रे then features number 9 it separated for the first time आसिला important provincial budgets from the central budget तो क्वेश्चन आसीबो according to which act provincial budget and central budget are separated answer is act of 1919 then feature number 10 it provided for the appointment of a statutory commission to inquiry into and report on its working after 10 years of its coming into force 10 वर्ष coming force आसला परे report दबो बोली decide करा गला then feature number 11 it proposed the establishment of chamber of princes also known as Narendra Mandal the chamber was inaugurated in 1921 गोटे चैम्बर करा जिवो जोथरे कि हमर कहा जिवो establishment of chamber of princes जो princely state थिले princess मानक पई it consisted of 120 members that is princes of 108 states and 12 representative of other state it was headed by the viceroy तो ए जो कमिटी बना जिवो ए जो chamber of princes बा नरेंद्र मंडल करा जिवो सेथिरो हेड के रहिबे वाइसरॉय रहिबे इट फैसिलिटेटेड द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट माने पब्लिक रो कोन इंटरेस्ट अछि से विषय डिस्कस करा जिवो एही नरेंद्र मंडल रे तापर आसिला हमरो साइमन कमिशन अगेन वेरी इंपोर्टेंट साइमन कमिशन केबे आस्तिले ना 1927 मसिया The British government announced the appointment of a 7-member committee. केते जण कमिटी थिले 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon. Sir John Simon को नेतृत्व रे 1927 मसिया रे गोटे 7-member statutory commission आसीथिला कोथि पई to report on the condition of India under new constitution. इंडिया रो न्यू constitution रो प्रभाव इंडिया ऊपर कोन अछि ता विषय रे गोटे रिपोर्ट दबा पई आसीथिले सर जॉन साइमन को नेतृत्व रे गोटे 7-member स्टैट्यूटरी कमिशन जहा को हमें कहूछु साइमन कमिशन ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिशन वर ब्रिटिश किंतु से 7 मेंबर्स जो थिले ऑल आर ब्रिटिश सेति पई ताको समस्त
बॉयकॉट करिया पे चाहुतिले आ कमिशन तार रिपोर्ट सबमिट कला इन 1930 एंड रेकमेंडेड द एबोल्यूशन ऑफ डायरची आ से कोन कला डायरची टाको रिमूव कर दे पे कला डायरची कोड एना जो हमें पढिले डबल गवर्नमेंट जो करा जायतिला सब्जेक्ट रो डिवाइड हेतिला से डायरची को रिमूव करिया पे बा एबोलिश करिया पे 1930 रे रिपोर्ट देला ए साइमन कमिशन Extension of responsible government in the provinces, establishment of Federation of British India and Princely State, Constitution of Communal Electorate and so on. ये सब विषय रे communal electorate जहाँ भी decide कराइला 1990 रे 19 रे ये सब विषय रे report देला. To consider the proposals of the commission, the British government convened 3 round table conference of the representative of the British government, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट तो यही विषय रे जो रिपोर्ट हैला या पई तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी करा जायथिला on the basis of these discussion a white paper on constitutional reforms was prepared गोटे white paper prepare करा गला and submitted for the consideration of the joint select committee of the British parliament the recommendation of this committee were incorporated in the next government act of 1935 रे कोन हैला एमानकर जो 3 राउंड टेबल हैला जो रिपोर्ट तयारी हैला ताको 1935 अगेन से एक्ट रे लागू करा गला तापरे कम्युनल अवार्ड गोटे शॉर्ट नोट कम्युनल अवार्ड कोन थिला इन अगस्त 1932 रामासाय MacDonald, the British Prime Minister, announced a scheme of representation of the minorities which came to be known as Communal Award. Communal Award कौन करा गला ना 1932 मसीह से समय रे हमर जे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थिले मैकडोनाल्ड रामसाय मैकडोनाल्ड से गोटे स्कीम आनिले गोटे प्राइज बा रिवार्ड रो आनिले कम्युनल अवार्ड बोली से कौन करा कहा गला द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स सिख Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans but also extended it to the depressed classes. कौन करिले ना आगुरु या पूर्वरु कोन थिला ना सेपरेट इलेक्टोरेट जो थिला से केवल रिलीजियस बेस रे थिला सिख मुस्लिम क्रिश्चियन यूरोपियंस पई थिला ये कोन कले ना एक्सटेंड कर देले ताकू शेड्यूल कास्ट बा एससी एसटी मानक पई डिप्रेस्ड क्लास मानक पई एक्सटेंड कर दिया गला जहार प्रभाव रे कोन कहला ना गांधीजी अनशन कले गांधीजी वर डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन to the depressed classes and undertook a fast up to unto death in Yaruda jail Pune to get the award modified ए award को modified करिया पे गांधी जी हमर कोन करथिले ना फास्ट करथिले जोटा को पुना रे हेतिला at last there was an agreement between the Congress and Dr. B.R. Ambedkar शेषरे कोन हैला ए फास्ट रो प्रभाव रे एग्रीमेंट गोटे करा गला कांग्रेस आउ डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जे कि सेते बेले हमर डिप्रेस्ड क्लास रो नेतृत्व करूथिले जो एग्रीमेंट को हमें कहू पूना पैक्ट से कौन कला रिटेन द हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस जहा फल डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्व सीट दिया गला द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द पूना पैक्ट ये जो पूना पैक्ट जो करा गला हमर डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर आ कांग्रेस भितरे ताको ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कला एंड मॉडिफाई भी कला कम्युनल अवार्ड को मॉडिफाई कला इन रेस्पेक्ट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस बा शेड्यूल कास्ट पई मॉडिफाई कला दिस मींस दैट the provision of separate electorate for the depressed classes were dropped माने जो separate electorate करा गला only depressed पई हबो बोली सेटा को ड्रॉप कर दिया गला आ तांको पई कोन करा गला ना रिजर्व सीट रखा गला the scheme of representation contained in the communal award subsequently the provisions of the Poona Pact were incorporated in the next government act of 1935 next जो government of India act आसिला 1935 सेथिरे ताको include करा गला in other words the composition of the central and provincial legislature under 1935 act was based on the modified communal award माने हमें जोटा आगो को नेक्स्ट क्लास रे जो हमें पढ़िया को जाउ छे 1935 रो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एटा कोन छला कम्युनल अवार्ड रो गोटे मॉडिफाइड वर्जन तो आगो को हमें नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक अछि तो आज रो क्लास एति की बट बिफोर दैट गोटे क्वेश्चन जोटा रो आंसर कमेंट सेक्शन रे देबे क्वेश्चन इज when and where the Supreme Court established for the first time answer आपनकर कमेंट सेक्शन रे देबे आउ जदी वीडियो टी भल लागुची then like and subscribe